अच्छा चलो राफी कर ले स्टार्ट। अच्छा ये मैं रिवर्स से करूँ, ठीक है? ऑर्गेनिक फर्स्ट, जस्ट वन सेकेंड। वो भी अच्छा ठीक है, इसके एंड पे एक वो खोल लें, ई क्यू ए पीरियोडिक टेबल, राइट? अच्छा स्टार्टिंग स्टार्टिंग विद द लास्ट वन, ठीक है? लास्ट से स्टार्ट करते हैं। तो उससे कहा है कि द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन पॉलीमर इज शोन, विच मोनोमर इज यूज्ड टू मेक दिस पॉलीमर। तो ये कौन से टाइप का पॉलीमर है, ये पहले बता दो। कोई आइडिया राफे? So this is polymerization. नहीं वो तो है, लेकिन कौन से टाइप का पॉलीमर है? इज दिस अ कंडेंसेशन पॉलीमर और इज दिस एन एडिशन पॉलीमर? Addition polymer. ठीक है, एडिशन के अंदर ना देर इज एडिशन की निशानी ये होती है कि उसके अंदर ना देर इज नो लिंकेजेस, ठीक है? सिर्फ कार्बन चेन होती है और ये रिपीट यूनिट है उसका। तो वो ये रिपीट यूनिट होता है, बीच में आप लिंकेज तोड़ दो ना रिपीट यूनिट के, दैट्स योर डबल बॉन्ड ओवर देयर। So that's your monomer, and that's going to be which one? It's going to be कौन सा इनमें इन सारों में से? It's B. B or A? Just one second. दो कार्बन हैं, डबल बॉन्ड्स, राइट? सो दैट्स देयर। एक पे Cl है, हाँ B होगा, ठीक है? बस रिमेंबर डायरेक्शन उसने उल्टा करके बनाया हुआ। डायरेक्शन इज नॉट इम्पोर्टेंट, द CH3 might be pointing upwards or it might be pointing downwards, that should not make a difference. एडिशन पॉलीमर्स किस तरह बनते थे कि रिपीट यूनिट्स होते थे इसी तरह, और वो सारे आपस में जुड़ जाते थे। मतलब you had Cl and F, there's H, and there is CH3, and there's another double bond over here, and Cl and F, and you've got H, and you've got CH3. तो उनके आपस में बीच में there would be linkages formed, and the double bond would go away. It would turn into a single bond. अच्छा एक तो ये था। फिर एडिशन पॉलीमर्स में ना वो सारे एग्जांपल्स याद रखने हैं कि देयर वाज PVC एंड देयर वाज PTFE, टेफ्लॉन होता था, PVC ये प्लास्टिक पाइप्स वगैरह उसके अंदर यूज होता है। सो दीज वर ऑल योर एडिशन पॉलीमर्स। देयर वाज पॉलीइथीन एज वेल, व्हिच शुड बी रिमेंबर्ड। अच्छा एडिशन पॉलीमर्स का साथ एक और मसला था कि दे वर नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब दीज प्लास्टिक पाइप्स एक्सेट्रा, दे वर नॉन बायोडिग्रेडेबल, so they were harmful to the environment. You can't burn them because that would produce a lot of greenhouse gases. You can't dispose them off because you would need landfill sites for that, and that would waste a lot of agricultural land. What else you could do? You could animals can choke on them. ठीक है, so uh, there would be a lot of visual pollution because of that. ठीक है, ये सारी चीजें उसके साथ interlinked थी। अच्छा, which substances will react together to form ethyl propanoate? ये है क्या? What type of substance is this? It is an ester. अच्छा दैट्स एन एस्टर। एस्टर में क्या होता है? सीरियल बॉन्ड ओ होता है और ओ होता है बीच में होता है, ठीक है? तो इथाइल प्रोपेनोएट, तो हाउ मेनी कार्बन्स would they be on the oxygen side? Two carbons. तो ये जो इथाइल वाली साइड है, दैट्स द ये सिंगल ओ, so there would be two carbons of propanoate, so इस साइड पे there would be three carbons, ठीक है? including the serial bond हो, और बाकी H आप ऐड कर लो, ठीक है? सो वो ये कह रहे कि इनमें से कौन से which molecules would form this ester? Molecules कौन से form करेंगे? इसको वापस आप तोड़ दो तो मुझे बताओ what would this turn into and what would this turn into? Uh, the on the right hand side it will turn into ethanol, and on the left it हाँ, will turn into propanol. propanoic acid, Propanoic acid. ठीक है? And this that would turn into जो single O वाली side है, that would turn into an alcohol, ठीक है? अच्छा अगला, how is ethanol produced by fermentation? What's the process fermentation का? क्या क्या होता है fermentation में? What substance do you use in fermentation? We use glucose. ठीक है, so you use glucose. इक्वेशन क्या होती है fermentation की? मतलब C6H12O6 तो होता है। Breakdowns to carbon and oxygen.
नहीं, एथेनॉल बनता है उसमें प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, टू ईच आई थिंक। तो उसका एथेनॉल प्रोड्यूस होता है। इसकी कंडीशंस क्या होती हैं? कंडीशंस आर रूम टेम्परेचर 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसमें एक चीज डालते हैं, वो क्या चीज होती है? व्हाट uh, इज? uh, yeast. ठीक है, यीस्ट इज एडेड। ये रूम टेम्परेचर क्यों रखते हैं? So that the yeast do not get inactive or हमने यही है कि 25 से नीचे ना यीस्ट बिकम्स इनएक्टिव, और 25 35 से ऊपर ना यीस्ट इज yeast dies, it gets denatured, ठीक है। So that is what happens uh, in that case। अच्छा, फिर एक और चीज होती है, एनारोबिक होती है। इट्स absence of air, uh, that's also a must। क्लियर है? yes sir. फिर इसमें कि एथेनॉल जो प्रोड्यूस होता है, द रिएक्शन इट हैज अ वेरी लो यील्ड। तो व्हाई डज इट हैव ए लो यील्ड? सिर्फ कोई 10% यील्ड होती है। So that it won't blast. हाँ, So if we keep high temperature, there will be more yield, but uh, the product will blast. नहीं, इट वोंट। वो होता ही है कि द अल्कोहल प्रोड्यूस्ड, इट किल्स द यीस्ट। ठीक है, इट किल्स द यीस्ट, जिसकी वजह से यीस्ट मर जाती है। सो नॉट अ लॉट ऑफ अल्कोहल कैन बी प्रोड्यूस्ड। So it kills the yeast, that's why। And the alcohol is then obtained by distillation। I mean, you distill it off, बाकी जो भी mixture है ना वो पीछे रह जाता है। Alcohol, remember, is a volatile substance, ethanol specifically, uh, and it boils at 78 degrees centigrade, so you can easily evaporate it and condense it at some other point। So conditions are anaerobic, without oxygen at 30 degrees centigrade, so it's going to be A। Clear है? Yes sir. As three chemical reactions: catalytic addition of steam to ethene, combustion of ethanol, and fermentation of glucose। In which of the reaction does the relative molecular mass of carbon containing compound? तो हर किसी को कर लेते हैं। इथीन के अंदर स्टीम ऐड करोगे, व्हाट वुड बी द रिएक्शन? एल्कीन्स के सारे रिएक्शंस दे आर एडिशन रिएक्शंस। It will form alcohol. ठीक है, सो एक जगह पे H, एक जगह पे OH ऐड हो जाएगा, एंड द डबल बॉन्ड वुड गो अवे। सो दैट्स। और इसकी कंडीशंस क्या होती थी? Alkenes के you had three addition reactions। You had bromination, you had hydrogenation, and you had hydration, which was with steam। जिसकी कंडीशंस ये होती थी कि तो स्टीम चाहिए होती थी, you needed 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, एंड you needed 60 एटमोसफेयर प्रेशर। ठीक है, वो लिंक्स है ना बोर्ड के जिसके अंदर सारा ऑर्गेनिक किया हुआ है। Yes sir, and H3PO4 catalyst. हाँ, उसको ACPO4 कैटलिस्ट। ठीक है, तो go through that। अच्छा, then the next one, combustion of ethanol। What happens in ethanol when it burns? क्या प्रोड्यूस होगा? Carbon dioxide and water. So it's going to produce so it's going to produce carbon dioxide and water, and it's going to burn in oxygen। अच्छा, what about fermentation of glucose? ये तो भी किया था ये सारा। So कह रहे हैं, in which of the reactions does the relative molecular mass of the carbon containing compound decrease? तो पहले वाले में डिक्रीज हो रहा है। इथीन छोटा था, एथेनॉल जो है दैट्स बिगर, राइट? सो द फर्स्ट वन इज रॉन्ग। इज दैट क्लियर? Yes. अच्छा, combustion of ethanol, this is ethanol, and the carbon containing compound is carbon dioxide, so obviously mass decrease हुई है। So that's clear as well, right? Yes. अच्छा, then you've got what else? You've got
fermentation of glucose वो ये है तो mass decrease हुई है you had 6 carbon atoms now the ethanol molecule only has 2 carbon atoms that's it ठीक है clear है Yes. so 2 3 are correct and your answer is 2 and 3 I say 37. Let's move to 37. Which row identifies compounds in the same homologous series? Chemical properties क्या होंगी? Same chemical groups. So you're going to have similar chemical properties and functional group क्या होंगे? Same. ठीक है वो भी same होंगे. अच्छा statement 1 hydrogen is used as a fuel. Is that true? Yes. ठीक है that is used as a fuel and it's used as a fuel in rockets. ठीक है rockets or spaceships and etc. So hydrogen oxygen fuel cell ठीक है आपका जो hydrogen oxygen fuel cell that also uses that. So when hydrogen burns in the air to form water, heat energy is produced. I mean, it's used as fuel because heat energy is produced. So that is definitely true. So which is the correct statement? Both statements are correct. Well, both statements are correct. Both statements are correct. It will be A. Yep. Statement 2 explains. Statement 1 that's true. As the next is the diagram shows the pH values of soils in two parts of a garden X and Y. So यहाँ पे तो garden neutral है यहाँ पे क्या है acidic है lime is used to neutralize the soil in one part of the garden to which part of the garden would the lime be added and why lime का formula क्या होता है CO3. नहीं lime is calcium oxide या फिर calcium hydroxide limestone is CaCO3 ठीक है तो किस साइड पे डालना है So it would be on the side of Y. साइड ऑफ Side of Y. So it will be D. ठीक है D and lime is basic that's why ठीक है अच्छा next one अच्छा just hold on 1 second एक सेकेंड रुकना अच्छा so it's which one is it D. अच्छा इसका D हो गया ठीक है next one it's an equilibrium reaction. The forward reaction is exothermic. So, which combination of pressure and temperature gives the highest equilibrium yield? You want to shift the equilibrium to the right. So, how would you do that? High pressure, low pressure. High pressure. ठीक है, so it's going to be high pressure क्योंकि less gas mole side favor होगा, ठीक है. So, and temperature, would it be low? It's an exothermic reaction. So, would it be low or high temperature? Low temperature. So, it's going to be low temperature, right? So, it's going to be B. As the next is which pollutant gas is produced by the decomposition of vegetation? Methane. B. ठीक है, it's going to be Methane. Second option.
ठीक है. बाकियों की सोर्सेज बता दो. Where is carbon monoxide produced? by incomplete combustion of hydrocarbons, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कब प्रोड्यूस होता है? in pollutants in cars, यप. और कहाँ पे नेचुरली कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? अच्छा, in कहाँ. lighting activities, ठीक है. और सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से प्रोड्यूस होता है? volcanic eruptions. ठीक है. Which pair of compounds would make an NPK fertilizer? It will be last option. Why the last option? It is because potassium nitrate has this ammonium sulfate. So it's ammonium and sulfate, right? And it's 4 plus 1, and you've got SO4 minus 2, right? So where's P? It will be potassium nitrate and ammonia will be NPK. Nee, where's P? I mean, there's P is phosphorus, okay? Where is phosphorus? Oh, it will be at A and C. Achha, A and C. Nee, A ke andar do you have N? No. You don't have N over here. So it's going to be A, because ammonium N, uh, potassium is K, and phosphate is P. Okay? So it has all of them. So it's going to be A. And it also can't be, it has to be soluble. So it can't be calcium phosphate anyways, because calcium phosphate is not soluble. Fertilizers, they need to be soluble. As the next one, which process do not produce carbon dioxide? Uh, 2 and 3. No, sorry. 3 to hai because it consumes carbon dioxide, right? Yes. So it will be 3 and 4. 3 and 4. प्रोडक्शन ऑफ नायलॉन. हाँ, ठीक है. अच्छा, प्रोडक्शन ऑफ नायलॉन में क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ नायलॉन में व्हाट यू हैव इज कि नायलॉन क्या होता है? नायलॉन इज अ पॉलीएमाइड. उसके अंदर एक मोनोमर होता है जिसके दोनों साइड्स पे NH2 होता है, राइट? और one of the monomer has carboxylic acid groups on both sides. ये इसके मोनोमर्स होते हैं. और इस तरह के ना there would be thousands and hundreds of thousands. तो इसमें कंडेंसेशन रिएक्शन होता है. H और OH रिमूव होता है, इसका OH रिमूव होता है, इसका H रिमूव होता है. So they all turn into water. ठीक है. So the H and the OH, they get removed. इधर से भी OH, इधर से H, and they turn into water, and you have a condensation reaction, and the monomers they link up. तो इसके अंदर water produce होता है. It does. Which process do not produce carbon dioxide? This does not. It does not produce carbon dioxide. ठीक है. Is this clear? Yes. I said water must be purified before it is suitable for use in the home. Which process are used to remove solid impurities and kill bacteria? Solid कैसे remove करते हो? Filtration. Bacteria कैसे kill करते हो? Chlorination. अच्छा, next one is air is a mixture of gases. The melting and boiling points of some gases present in clean dry air are shown. In the fractional distillation of liquid air, which gas boils first? In some ways, which one is going to boil first? Higher boiling point वाली boil करती है या lower boiling point first? High boiling. नहीं, boil करना है. Let's High. say ethanol है, वो 78 डिग्री सेंटीग्रेड उसका boiling point है. Water है, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड उसका boiling point है. Iron है, let's say उसका 2800 डिग्री सेंटीग्रेड boiling point है. तो जब आप हीट करना शुरू करोगे, कौन सा सबसे पहले बॉईल करेगा? 28. 78, राइट? मतलब वो सबसे पहले बॉईल करेगा ना. वो जो जिसका हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है वो तो बॉईल बहुत, उसको यू नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी फॉर दैट. तो विच वन हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इन दीज?
It will be one minus 150, 196, Minus 196. lowest boiling point, huh? ठीक है, minus 196. Then you've got aluminium is used. Which statement about the use of aluminium, copper, and iron is correct? तीनों का वैसे बता दो मुझे. Where is aluminium used, and why is it used? Give me three places where aluminium is used. Aluminium is used in cooking utensils, for manufacturing of planes and Hmm. sir, what's the third one? The manufacture of airplanes. Why is it used in the manufacture of airplanes? Sir, because it has low density. अच्छा, second क्या बताया था? Uh, Stainless steel, so it is used in manufacturing of Not stainless steel. It's used to. I mean, you make windows and things out of it because it doesn't rust, right? क्योंकि उसके ऊपर there's a tough coating of Al2O3 on top of it, and then you have aluminium where it's used as for high voltage transmission because it's a very good conductor of electricity. अच्छा, कॉपर कहाँ पे यूज होता है? in transporting heavy electricity in copper wires. हाँ ठीक है, copper wise it's a good conducting material, plus it's also used to make uh, in older, नहीं चलो ठीक है, बस wires ही ठीक है. तो इनमें से which statement about the uses of aluminium, copper and iron is correct? First ठीक है कि No. गलत है? ठीक है, it's not because of high density. As a second one, aluminium is used for food containers because it is a good conductor. Why is it used for food containers? Aluminium foils वगैरह क्यों use करते हैं? Because it doesn't rust, it doesn't react. It's unreactive because it has a layer of Al2O3. Copper is used for cooking utensils because it is a good conductor of heat. That's true. Stainless steel is used for car bodies because it corrodes easily. First thing is it doesn't corrode easily, stainless steel. Second thing is stainless steel is usually not used for car bodies. कर भी लो ठीक है, कोई मसला नहीं है. अच्छा, next. A sample of solid X was added to three different solutions to predict the position of X in the reactive disease. Which other solution would react with solid X? But where is X in the reactive disease based on the reactions given? Is it higher than iron or not? It is higher than iron. If it's higher than iron, तो iron को displace क्यों नहीं किया उसने? Oh, sorry, lower than iron. ठीक है, so it's lower than iron, right? And अच्छा, what about so it's lower than iron. Is it higher than zinc or lower than zinc? Lower than zinc. ठीक है, it did not displace it. So it's like very low in the reactor disease. अच्छा, it is reacting with acids. What does that mean? मतलब ये It is कि a इस magic metal. ठीक है, not MASIT but also AlZnFeS and PBH. अच्छा, that indicates that it's higher than H in the reactor disease. इससे ऊपर जो है, they all react with acids apart from lead. Lead only reacts with concentrated acids, right? So और top वाले जो हैं वो तो explosively react करते हैं. So that means it's at least higher than H. So किसको ये displace कर देगा? I mean, copper is right at the bottom, right? Copper doesn't react with acids. So if I add X to copper sulfate, then the copper is going to get displaced. Is this point clear? Yes, sir. So it's going to get displaced, and it because it's more reactive than copper. So next one, aluminium is extracted from aluminium oxide using electrolysis. Carbon dioxide is formed in the process. Which equation shows the formation of carbon dioxide during the extraction of aluminium from aluminium oxide by electrolysis?
पहले बताओ कि क्विक रिकैप के व्हाट्स द ओर ऑफ ये जो भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इस एल्यूमिनियम का ओर क्या होता है? व्हाट्स द नेम ऑफ इट? hematite Fe2O3. नहीं, बॉक्साइड होता है एल्यूमिनियम। Sorry, ठीक है, दैट्स Al2O3। इम्प्योरिटीज क्या होती है? it is Fe2O3. So that's Fe2O3. Then you have K. I mean, you have Al2O3 and you've got Fe2O3. How do you remove Fe2O3? By using NaOH as a base. ठीक है, NaOH concentrated, और उसके अंदर होता है कि use NaOH concentrated. Al2O3 dissolves, Fe2O3 does not dissolve because Fe2O3 is basic, Al2O3 is amphoteric. So Al2O3 would dissolve in NaOH, and if it dissolves in NaOH, उसका फिर वो आगे करते हैं electrolysis, जिसके अंदर you have aluminium ions and you've got oxygen -2 ions, right? तो कैथोड पे कौन सा अट्रैक्ट होता है? It will be कैथोड इज द नेगेटिव साइड। oxygen. नहीं, कैथोड नेगेटिव है। नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। Positive. Al+3 would go over there and gain 3 electrons to form aluminium. और एनोड किसको अट्रैक्ट करेगा? वो ऑक्सीजन -2 को अट्रैक्ट करेगा, and it would lose electrons diatomic, so I'm doubling it, to form oxygen. ऑक्सीजन जो है वो कार्बन इलेक्ट्रोड्स के साथ रिएक्ट करके it would form carbon dioxide. So it's going to be C. Is this clear? Yes, yes. तो आपके जो कार्बन एनोड्स होते हैं ना, वो बर्न करना शुरू कर देते हैं when this happens. I said next one. Which two properties are physical properties of all pure metals? B. B? Yep, Yes. B is correct. Acha, which statement about group 1 and group 7 elements are correct? Is lithium more reactive than potassium? What happens to the reactorices in group 1? So it increases down the road. ठीक है, तो lithium ऊपर बैठा हुआ है, potassium कहीं नीचे बैठा हुआ है। ठीक है, so which one is more reactive? Potassium. So statement 1, lithium is more reactive. That's wrong, obviously. Group 7, chlorine is more reactive. तो non-metals में group 7 में which one is more reactive? Fluorine or chlorine? Fluorine. तो chlorine is more reactive, वो भी गलत है। तो both of them are wrong. ठीक है। As the next one, metal X reacts with non-metal Y to form an ionic compound with the formula X2Y. Which statements are correct? So it will be. So X is in group 1 and Y is in group 6. So A. Actually, X is in group 1. हाँ, ठीक है। And Why Y do you know? Y is in group? group 6. हाँ, तब यही फॉर्मूला बनेगा, तो it's going to be, ठीक है, 1 and 3. So it's going to be A. ठीक है, so that's correct. कि नहीं, sorry, Y is in group, नहीं यही होगा 3. And why? Because formula वो होना चाहिए, x is +1 and y is -2, and that's why you get the formula x2y1. As the next one, you've got the periodic table. List all the known elements. Elements are arranged in order of dash. What in the periodic table? What are the elements arranged according to? Nucleon or proton number? Proton number. So they are arranged according to proton number. The melting points of group 1 elements dash down the group. Increase or decrease? Increase. So they increase down the group. फिर वो आखिरी भी the melting points of group 7 elements, what happens to them? They decrease. The melting point of group 7 elements decrease down the group. The melting points of group 1 elements, नहीं गलत है. Melting points of group 1 elements, they decrease और इनकी increase होती है. Remember that.
ठीक है। मेटालिक लैटिस जो होता है ना वो वीक होता जाता है जैसे जैसे बड़े होते हैं ना। तो metallic lattice is a bunch of positive ions and sea of free moving electrons. You will remember this. कि if you have a metallic lattice, bigger atoms they make weaker bonds. Right? Is this clear? So Yes. this is an important point. और halogens में उल्टा होता है. Halogens में fluorine and chlorine are gases. नीचे जाते हैं bromine is a liquid, iodine is a solid. तो melting points increase होते हैं when you move down the group in these things ये जो ionic है. अच्छा, which method is used to make the salt copper sulfate? Acid plus carbonate. Acid plus? Carbonate. So copper carbonate plus acid मतलब कौन सा acid use करेंगे sulfuric acid right? So obviously you can make a salt. It's going to form copper sulfate plus H2O plus carbon dioxide. ठीक है? Is that clear? Vice versa अगर वो the other thing was कि why can't you use metal plus acid? Because metal, only magic metal reacted with acids. Copper is too unreactive. Copper will not react. Why can't you use alkali plus dilute acid? Because Cu is not an alkali. हाँ मतलब Base. copper oxide and copper hydroxides are not alkalis क्योंकि they don't dissolve in water. और बाकी नॉन मेटल ऑक्साइड तो वैसे ही गलत है. You don't use non-metal oxides. It has to be a copper oxide. ठीक है. अच्छा, you've got these five. How many of these elements form acidic oxides? Acidic oxides. Who forms the acidic oxides? Metal or non-metals? Non-metals. So sulfur would form acidic oxides SO2 and SO3. They would turn into sulfuric acid. And carbon would also form acidic oxide because it would turn into carbonic acid. ठीक है. Yes. तो बाकी जो है ना वो basic है. So that's two. Next is a solution of compound Z gives a light blue precipitate with aqueous ammonia. The precipitate dissolves in excess of ammonia. A flame test is done on compound Z. पहले तो बताओ light blue precipitate with aqueous ammonia. Who makes a light blue precipitate? Blue precipitate एक ही चीज बना रही होती है. What is that thing known as? Copper. ठीक है वो कॉपर है उसका फ्लेम टेस्ट भी याद रखना है. So where's the sheet? कहाँ पे है? Just a second. So light blue precipitate, ammonia and dissolves, that's copper obviously, ठीक है. And you should know the flame test as well of copper, which is blue green. Clear है? So it is blue green color. Where's the so it should be blue green. It's going to be A. Clear है? अच्छा अगला, ethanoic acid reacts with water to produce an acidic solution. Which row describes the role of ethanoic acid and water in the reaction? तो ethanoic acid क्या होगा? It's an acid. What does it do? Accept or donate? Donate. So it's going to donate a proton, right? So it's फिर तो C है. That's the only option left. ठीक है. Yes. अच्छा इसके बाद the next one. Calcium carbonate reacts with hydrochloric acid to form carbon dioxide at higher temperature. The same reaction is faster. Why is the reaction faster at higher temperatures? Collision rate क्या होगा? Increases. अच्छा, number of molecules with sufficient energy to react. It is also increasing more. क्योंकि obviously वो ज़्यादा energetic हैं, so they obviously have more energy, right? अच्छा 15 we कर लेते हैं. Which reaction is the rate of reaction not affected by light? D.
Which one? Last option. नहीं वो फोटोकेमिकल ही है. एक सेकेंड. This one, bromination reaction was absence of light होती थी इस reaction के अंदर. There should be no light present in bromination reaction. ठीक है? Is this clear? Yes. So no light should be present. I said the ionic equation for the reaction between zinc and aqueous copper to copper ions is shown. Which statement about this reaction is correct? तो अच्छा, which statement is correct? You find out Uh, करो क्या होगा. it will be C. It's going to be zinc atoms are oxidized. हाँ ठीक है. And the oxidation state, it definitely changes. So it is C. As the next one, for equilibrium आ गया. Which combination of temperature and pressure gives the highest yield of methanol? Forward भेजना है इसको. तो क्या करोगे? How would you make it go forward? Less temperature ठीक है. and more pressure. So B. So it's going to be B. Number 12 is ये जरा वो reaction calculate करो कि क्या energy होगी इसकी. How many bonds are broken and how many bonds are formed? तो CH4 यानी 4 CH के bonds तोड़े हैं. ठीक है. O2, so that's 2 O double bond O that are broken. ठीक है. So that's 410 times 4, and you've got 2 times 496. ये सारा एंडोथर्मिक है, पॉजिटिव है. फिर बॉन्ड्स फॉर्म कितने किए हैं? बॉन्ड्स फॉर्म किए हैं कार्बन डाइऑक्साइड. यू फॉर्म्ड कार्बन डाइऑक्साइड, सो दैट्स 2 bonds. So that would be minus 2 times 4 805 actually. और कौन सा बॉन्ड फॉर्म किया? वाटर मॉलिक्यूल्स, those 4 OH bonds. Is this clear? Yes. ठीक है. तो 4 into 460. अच्छा, next is के the energy level diagram for the reaction X2 to Y2 forms XY gas is shown. Which statement is correct about this? It will be C. हाँ ठीक है. It is negative. It's going down. ठीक है. तो C है. अच्छा, ये तो पूरा ही हो रहा है इसमें. अच्छा, this question. Remember कि electrochemical cells में you had more reactive metal, right? And you had less reactive metal. So there would be a voltage that would come on the, क्योंकि more reactive जो electrons produce करता है, so the electrons they travel to the other side from the more reactive to the less reactive, because the more reactive really likes to lose electrons. So more reactives, they like to lose electrons and they go towards the less reactive. So say a table shows the reading of the voltmeter when different metals are used. तो अगर reactivity में difference कोई भी नहीं होगा तो voltage would be very very low. तो मैंने कहा okay, which one is what is the order of the reactivity? उसने मेरे ख्याल से one of the electrodes is अच्छा metal 2. इस पहले वाले को देख लो. metal 1 उसने beryllium रखा है. metal 2 उसने cerium रखा है. So the voltage is coming out to be positive. What does that indicate? More current. नहीं, इसका मतलब क्या है कि which one is, पहले तो इसको देख लो ना कि which one is compared to beryllium, like which one has the maximum difference. मतलब एक साइड पे beryllium है 0 volts, 0.64 volts, 1 minus 1.57 volts and 0. So this is the extreme end, this is one end of the spectrum, and this one has the highest potential, right? Most positive. So that indicates that this one is probably the positive electrode.
राइट। मतलब ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, इसके ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल क्यों है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा होगा। So one end would be cobalt, the other end would be cerium. So it's either going to be B or C. टाइम एक्चुअली कम है, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इफ यू लुक एट द क्वेश्चन अ सिंपल सेल, मुझे तो मोर रिएक्टिव जो वो, अगर मोर रिएक्टिव क्या करता है, इट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ये बात Yes. क्लियर है। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, देयर वुड बी लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द मोर रिएक्टिव साइड। मुझे बताओ इसके ऊपर कौन सा चार्ज बिल्डअप होगा। Positive. नहीं, इलेक्ट्रॉन्स वो लूज कर रहा है तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स जमा हो गए ना, तो नेगेटिव पोटेंशियल बिल्डअप होगा। इज दिस क्लियर। Okay, sir. Yes. क्योंकि वो खुद तो इलेक्ट्रॉन लूज करके सोल्यूशन में चला गया, मतलब वो जो आयन है ना पॉजिटिव, वो तो सोल्यूशन में डिसॉल्व हो गया। अच्छा, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स पे ट्रैवल करेंगे तो वो पॉजिटिव वाली साइड पे ट्रैवल करेंगे, दूसरी साइड जो वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहती, सो दैट्स रिलेटिवली योर पॉजिटिव साइड। क्लियर है बात। Yes, sir. नाउ वन साइड इज नेगेटिव, द अदर साइड इज पॉजिटिव। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इसने वोल्ट मीटर जो है अ, उसने कहीं पे ये नहीं बताया कि विच वन इज द पॉजिटिव, विच वन इज द नेगेटिव। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं वही सोच रहा था कि कहाँ पे मिसिंग है। तो उससे कहा है कि इफ मेटल 2 इज मोर रिएक्टिव देन मेटल 1, द वोल्टेज मेजर्ड इज पॉजिटिव। यानी वो कह रहे हैं कि अगर मेटल 2 जो है ना, वो मोर रिएक्टिव देन मेटल 1 है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, बेरिलियम और सीरियम। तो मेटल, वो कह रहा है, उससे कहा कि मेटल 2 इज मोर रिएक्टिव देन मेटल 1, तो वोल्टेज इज पॉजिटिव। तो वोल्टेज पॉजिटिव आ रही है ना, तो इसका मतलब है सीरियम इज मोर रिएक्टिव देन बेरिलियम। Yes. इज दिस क्लियर। Yes. तो उसने यहाँ पे बेसिकली मेंशन किया हुआ था मेटल 2 इज मोर रिएक्टिव देन मेटल 1। अच्छा, इधर क्या नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब है बेरिलियम इज मोर रिएक्टिव देन कोबाल्ट। Yes. फिर लास्ट वाले में भी नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब है कि बेरिलियम इज मोर रिएक्टिव देन Magnesium. मैग्नीज। तो मैग्नीज से भी ज्यादा रिएक्टिव है। सो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा हुआ, सीरियम, फॉलोड बाय बेरिलियम। और लास्ट टू में डिसाइड करना है कि कोबाल्ट और एमएन में कौन है। तो ये कोबाल्ट और एमएन वाला देख लो कि उससे कोबाल्ट एमएन वाला, मेटल 2 इज मोर रिएक्टिव देन मेटल 1, द वोल्टेज इज पॉजिटिव। तो इसका मतलब मैग्नीज इज मोर रिएक्टिव देन कोबाल्ट। इज दिस क्लियर। Cobalt. Yes, sir. तो बी होगा, ठीक है। Yes, sir. तो ठीक है, लेट्स इसको अभी बंद करते हैं, बस थोड़े से क्वेश्चंस रह गए, देख लेना, ठीक है। Yes, sir. चलिए ठीक है, ओके, ठीक है, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.